اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. Alhamdulillah, this will be our 13th class and it will be our 13 chapters. Inshallah, after 3 classes, the first level will be completed. So hope you will be revising what we have covered so far. There are still students I can see, they're still joining in. I don't know what is the problem. They are facing some problem in joining. Let's start the vocabulary part first. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The first word is rizq. The meaning of rizq is sustenance, or sometimes you can do the translation as provision as well. So the meaning of rizq is sustenance and provision. You can write the meaning, provision. If you see the dictionary, Arabic dictionary, in the dictionary, the meaning of rizq, the literal translation, is the thing which is given continuously. ہمارا جو رزق خداوند متعال کھانے پینے کا جو دیتا ہے جس کو ہم رزق کہتے ہیں، جبکہ رزق کی ڈیفینیشن بہت بڑی ہے. The thing which has been given continuously. So آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کتنی چیزیں کنٹینیوس دی ہیں. مثلا فار ایگزامپل جو کنٹینیوس آپ کو عطا کی ہیں خداوند متعال نے، یہ زندگی عطا کی ہے جو کنٹینیوسلی آپ سانس لے رہے ہیں، ہر بریتھ جو ہے وہ آپ کی کنٹینیوس ہے، تو یہ بھی رزق ہے خداوند متعال کا. محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، اگین اٹ از اے رزق. ہیٹریڈ ٹورڈز دا اینیمیز آف اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام، اگین اٹ از اے رزق. تو رزق کی ڈیفینیشن بہت بڑی ہے، لیکن عموماً عام طور پہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں جو ہمارے بطن میں پیٹ میں جاتا ہے اس کو ہم زیادہ تر کنسیڈر اس کو رزق کہتے ہیں، جبکہ رزق کا جو سرکل ہے بہت بڑا ہے. Everything which is given continuously, this is called rizq. The second word is shafa'ah. Shafa'ah is intercession. The root word of shafa'ah is shafa'a. Sheen, fa and ain. شفاعت کو شفع کے معنی کیا ہیں؟ The meaning of شفع in Arabic dictionary کہ دو چیزوں کو, two things which are similar to each other, تو ان دو سملر چیزوں کو آپس میں میچ کروا دینا، آپس میں ملا دینا. تو سملر چیزوں کو آپس میں جو ملا دیتے ہیں اس کو آپ شفاعہ کہتے ہیں، شفع کہتے ہیں. Why in Arabic shafa'at? So what is the meaning of shafa'at then? شفاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خداوند متعال یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم he is the intercessor. تو انٹرسیشن کریں گے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یعنی جب وہ ہماری انٹرسیشن کریں گے تو ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے. We will be with them, we will join with اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام. سو شفع کے معنی عربک میں کیا ہیں؟ دو ایسی چیزیں، ٹو سملر تھنگس، ان کا آپس میں مل جانا. سو شفاعت کے روٹ ورڈ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے if we want the intercession of رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم or the intercession of اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام, at least we should have some similarity to اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام. اگر سملرٹی نہیں ہے تو شفاعت نہیں ہو سکتی ہے. The next word is arsh. Next word is arsh.
Arsh, the translation is throne. But in Arabic dictionary, everything which has a roof is called arsh. Everything which has a roof is called arsh. ऐसा नहीं कि roof को arsh कहते हैं, नहीं नहीं. Everything which has a roof is called arsh. Masalan, a building which has roof, that building will be called arsh, not the roof will be called arsh. The plural of arsh is urush. The next word is ghair. Ghair is, you will do the translation as other. Now in the verse, you will see that we have to do the translation as other than. So other than, then we have written in bracket because the literal translation of ghair is other. If you say ghairullah, then you will say other than Allah. So then you will say you will write in bracket actually. The next word is kareem. Here we have done the translation as honorable or noble. Actually, the meaning of kareem is generous, not honorable and noble. Because the verse, what we are going to do tonight, this characteristic of kareem has been given to throne. That's why we will do the translation as noble, that throne is noble. You cannot say that the throne is generous. kareem का मतलब क्या है? करीम का रूट वर्ड है करम से है. खुदावंद मुतआल से के बारे में अगर कहा जाए कि if Allah is Kareem, so what does it mean? It means that the favors and blessings are given by Allah subhanahu wa ta'ala. So if we say Allah is Kareem, that the meaning will be that the favors and blessings are generated by Allah subhanahu wa ta'ala. So literally the meaning will be he's generous because he gives favors and he gives blessings. The next word is Malik. Malik, the translation can be, if you remember, we did that word before. So the meaning can be king and the meaning will be sovereign. So both the meanings are correct. Let's go to the next word. The next word, is ta'ala. Ta'ala, we did that before. We did this word before. The root word is uluv. Ain, lam, vav. Ali has been derived from this particular word, uluv, alawa. Uluv. We did that word before. Ali. Ali was exalted. Aliyul Azim, exalted. Now Ta'ala will be having the same meaning, exalted. The meaning is high, uska status high hai, exalted. The next word is Masir. Masir is return or end. Wa ilayhil Masir. And towards him is the return. So Masir, the root word is Mim Swad Ra, Masara. Nasir, the next word is Nasir. The root word of Nasir is Nasara. Nasir, the meaning is helper. The next word is Wasi'. Wasi'a, the root word is Wasa'a. Sometimes you say Wasi'. Sometimes you say Wasi'. Someone is raising the hand. I don't know. Okay. Wasi is extensive. Extensive. But if you see in the given verse, extensive is an attribute of bounties of Allah or His favors. So the translation will be as all bounteous. So if wasi', if this is the characteristic of the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, then it will be translated as all bounteous. But the literal meaning is extensive.
Let's go ahead. The next word is wasib. What is the meaning of wasib? Wasib is enduring, and it can have a meaning of constant, the thing which is permanent. It is called wasib. Actually, the root word of wasib is wasaba. What is the meaning of wasaba? Wasaba is a permanent disease. A permanent disease in Arabic is called wasab. And all the things which are constant, which are permanent, they are called wasib, enduring. The next word is akthar. Aksar, you can translate this as most, more, many. More and most. One is comparative degree, and the most is a superlative degree. You can translate this as many as well. The next word is a. A is used for questioning something. Now, what is the meaning of it? In English, for asking anything, so there are particular, for example, helping verbs we can use. Is, am, are, was, were. So these are the helping verbs we use. But the meaning of a, if you see the footnote, the term a is used for asking question. It translates to are, is, what, etc. Based on the usage in the sentence, it depends how this is being used in the sentence. So it depends on the scenario where it is used on the sentence. The next word is ala. Now this ala has a different meaning than your Allah in Swahili. I don't know what is the meaning of Allah in Swahili. You say Allah, acha. So this is not the meaning of Allah in Arabic. Allah is be informed. Let it be known to you. Let it be known. Be informed. किसी को आगाह करने के लिए, किसी को बताने के लिए. Allah बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब. Allah यानी be informed, आगाह हो जाओ. तो ये उसके लिए होता है कि इंसान सुन नहीं रहा होता है बात, लिसन नहीं कर रहा होता कोई बात, तो उसको जगाने के लिए Allah यूज किया जाता है. But in Swahili, it's a different meaning. What is there in Arabic? The next word is yamliku. Yamliku, he owns. Malik, malak ऐसा है, he owns. और इसका एक और मीनिंग कर सकते हैं, he possesses. Sorry. इसका एक और मीनिंग कर सकते हैं, he possesses. ये कर सकते हैं. यखलुकु, यखलुकु, he creates. देखें अरबिक के अंदर हमारे पास 3 वर्ड्स यूज होते हैं. एक होता है फातिर, एक होता है बदी, एक होता है खालिक. सॉरी. फातिरुस समावाति वल अर्द, बदीउस समावाति वल अर्द, खालिक. ये तीनों लफ्ज जो हैं, इसका इंग्लिश में तो ट्रांसलेशन क्रिएट से की जाती है, ही क्रिएट्स. लेकिन अरेबिक के अंदर तीनों के माना डिफरेंट है. प्लीज पे अटेंशन और इसको बहुत अच्छे तरीके से सुने. ये एक अच्छी चीज है जो आपके लिए वोकैबुलरी के अंदर इंशाल्लाह आप इसको इजाफा कर सकते हैं. यू कैन इंक्रीज योर वोकैबुलरी लाइक दिस. व्हेन वी वर टॉट दिस बुक, वी वर नॉट टॉट लाइक दैट, बट आई एम टेलिंग यू टू इंक्रीज बिकॉज यू हैव दिस कैपेसिटी, सो यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन लर्न इन अ बेटर वे. फातिर किसको कहा जाता है? फातिर, बदी और खालिक तीनों के माना क्रिएट करने के. फातिर कब कहा जाता है? खुदा के लिए फातिर उस वक्त कहा जाता है कि जब कोई चीज को नॉन एग्जिस्टेंस से उसको एग्जिस्टेंस में लेकर आया जाए, यानी कोई भी चीज ना हो और वहां से एग्जिस्टेंस दी जाए. तो खुदा के मुताबिक फातिरुस समावाति वल अर्द क्यों कहा जाता है? कि खुदा ने जमीन और आसमान को बगैर किसी एग्जिस्टेंस के पैदा किया है. यानी इससे पहले कुछ भी नहीं था. इससे पहले अदम था. अदम यानी नॉन एग्जिस्टेंस थी. तो जब खुदा इस जगह पर ऐसे रिलेट करना चाहता है, ये बताना चाहता है कि मैंने उसको खल्क किया है, मैंने उसको क्रिएट किया है, कि इससे पहले कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, तो अल्लाह यूजेस द वर्ड फातिर, फतरा.
What is the meaning of badi'? Wait for a while. badi, अच्छा, फातिर के एक्चुअली लिटरल माने क्या है सुनिएगा गौर से. फातिर के लिटरल माना है किसी चीज के अंदर क्रैक होना, क्रैक पड़ना फातिर के माना है. क्योंकि खुदावंद मुताल नॉन एग्जिस्टेंस को क्रैक करते हुए एग्जिस्टेंस को लेकर आ रहा होता है, इसी वजह से उसको फातिर कहा जाता है. शिगाफ करना, किसी चीज को क्रैक करना, शिगाफ करते हैं. जैसे दीवार के अंदर, वॉल के अंदर वर्टिकली जो क्रैक पड़ता है, वर्टिकल क्रैक को फातिर कहते हैं. तो ये वर्टिकली क्रैक फातिर कहलाता है. खुदावंद मुताल ये क्रैक करता है किसको? नॉन एग्जिस्टेंस को, उसमें से एग्जिस्टेंस निकालता है. बदी किसको कहते हैं? बदी उस वक्त कहा जाता है कि जब किसी चीज को विदाउट एनी सैंपल्स और विदाउट एनी मॉडल्स किसी चीज को क्रिएट करना. देखिए, इंसान अगर किसी चीज को क्रिएट करना चाहता है तो उसके पास मॉडल्स और सैंपल्स होते हैं. मसलन अगर इंसान बिल्डिंग बनाना चाहता है, बिल्डिंग को स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहता है, तो उससे पहले मैप बनाता है, कोई चीज बनाता है, उसके बाद उसको जो है कंस्ट्रक्ट करता है, उसको क्रिएट करता है. तो मॉडल्स और सैंपल्स होते हैं. खुदा बदीउस समावाति वल अर्द है, यानी इसके पास कोई मॉडल और सैंपल्स नहीं थे कि उसको देखकर खुदा ने उसको कॉपी किया और उसको बनाया, बल्कि विदाउट एनी सैंपल्स खुदा क्रिएट कर सकता है. नाउ द लास्ट वर्ड इज खालिक. खुदा खालिक है, इसका मतलब क्या है? यानी डिफरेंट चीजों को कि जो डिस्पर्स हुई भी होती हैं, उन तमाम डिस्पर्स हुई हुई चीजों को बिल्कुल एक्यूरेटली उनको जमा करना और उनको जमा करने के बाद कोई नई चीज बनाना, इसको कहते हैं खालिक. अब खुदावंद मुताल अपने लिए क्या कहते हैं? व तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कि खुदा सबसे बेहतरीन खल्क करने वाला है. यानी आप भी खल्क कर सकते हैं, आप भी चीजों को जो एग्जिस्टेंस में मौजूद हैं उसको मिलाकर कोई नई चीज बना सकते हैं. लेकिन खुदा ये जो चीजों को एग्जैक्ट मेजर्स के साथ और जितना चाहिए उसके हिसाब से बनाता है, ये सबसे बेहतरीन खल्क करने वाला है. जैसे इंसान को खुदा बनाता है कि बेहतरीन कंपोजिशन के साथ बनाता है. तो फातिर, बदी और खालिक की आपने फर्क समझ लिए. लेट्स गो अहेड. यअबुदून, they all worship. यअलमून, they all know. आप ये दोनों वर्ड्स कर चुके हैं पहले. अऊज़ु, अऊज़ु, I seek protection, I seek refuge. तत्तकून, तत्तकून, the root word is वकाया, that you all are God very. God को ब्रैकेट में इस वजह से लिखा है क्योंकि यहाँ पर अल्लाह लिखा हुआ नहीं आया है. तो तत्तकून का मतलब यही है कि अल्लाह से आप डरते हैं. You all are God very. तुरजाउन, the root word is रजआ. रजआ का मतलब क्या था? रजअत जिसको कहते हैं कि हम आइमा अलैहिस्सलाम की रजअत कहते हैं, वो भी यहीं से रजआ से है. रजआ का मतलब होता है पलटना, टू रिटर्न. तुरजाउन, you all will be returned. युती, युती, he gives. He gives. You have 5 minutes to memorize the vocabulary. Okay, let's start with Brother Dilawar Padhani. Assalamu alaikum. Hello. Walaikum salam. Okay, let's Hello. start. Yes. Risk. Sustenance or provision. Sustenance or provision. इसका डिक्शनरी में क्या माना था? Dictionary में Arabic. इसमें because it is not only risk, it can be risk of anything, like risk of life, the ability to take breath, heartbeat, everything. I told you in Arabic dictionary, Yeah. risk means the thing which is being given continuously. Yes. So ऐसी चीज को रिस्क कहा जाता है. तो अब जो भी चीज कंटिन्यूसली दी जाए तो उसको रिस्क कहा जाएगा. Okay, go ahead. शफाअत. Intercession. Shafa'at, intercession. What is the meaning of shafa'? Make to match similar things. Ahsant. Arsh. Throne. What is the meaning of arsh in the dictionary? Actual meaning?
anything which has got a roof, أحسنت. like a building or house, أحسنت. غير. is other than. أحسنت. Thank you. Okay. Sister Fatima. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kareem. Honorable, noble. But the actual meaning of Kareem is, which we are not using in these verses, is the meaning of Generous. generous. Okay. Malik. Sovereign or king. Ahsant. Ta'ala. Exalted. Exalted. Masir. Return end. Nasir. Helper. Alpa. Wasi'. Wasi'ah. Extensive. 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 But we will do the translation as all bounteous because it will be the attribute of the favors and the blessings of Allah. Wasib. Enduring. Enduring. Thank you. Sister Fatima Megji. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Aksar. It means more, many, or most. Ahsan. Is actually used to ask a question, so it can be used for what, is, or are as a question mark. Ala. Allah is to be informed. Be informed. Yes. Yeah, let it be known. Let it be known. Yes. Yamliku. Yamliku can be used for he possesses or he owns. He owns and he possesses. Yakhluku. Yakhluku is he creates. He creates. Okay. Do you remember the difference? Yes, I do. Fatil, Badi, can you explain? Yes. Okay. So fatwir, the exact meaning is to correct something. So Allah puts the correct things into a perfect existence. And also it means that he created the earth before that nothing existed. So there was nothing at all and he created the earth. So that's fatwir. Okay. Badi is creating something without samples or models or maps. Mm-hmm. And Khalik is to make the dispersed things to come into one perfect creation. Mm-hmm. That's why Hazrat Isa ﷺ says, Anni akhluqu at-tayra, that I create a bird. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لیے کہتے ہیں کہ میں خلق کرتا ہوں, میں کمپوز کرتا ہوں جو ڈفرنٹ چیزیں جو میرے سامنے موجود ہیں. تو انسان can become خالق, but انسان can not become فاطر. Fatwir, yes. Because he cannot create anything from non-existence, because we can use all the things which are there in front of us. From that we can create something, but from zero we cannot create anything. This is only Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you. Yes. I'll ask Sister Fatima Megji. Sorry. Sister Fatima Shirali. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ya'buduna. They all worship. They all worship, okay? Ya'lamuna. They all know. They all know. A'udhu. I seek protection. Mm-hmm. Or I seek refuge. Tattaqoon. You are all goal-weary. Mm-hmm. Turja'oon. You all will be returned. You all will be returned. Now, Yu'ti. Let me finish this. He gives. Thank you. I will ask Mujahid Chandu. Salamun alaykum. Wa alaikum salam, Sheikh. خوب هستی حاجی آقا؟ الحمدلله خیلی خوبم، ممنون. الحمدلله. بله بفرمایید حاجی آقا.
Uh-huh. Number 1, Number 1. Okay. Allah Ta'ala. A. Question B. Informed and exalted. Mhm. Okay. Number 2, Tattaqun, Ya'budun, Ya'lamun. Mhm. A. You all are, in the bracket, God, very. They Mhm. worship, they know. Okay. Number 3, Kareem, Masir, and Nasir. It's A. Noble, return, helper. Thank you. Ahsan, Sheikhuna. Thank you. Thank you. Thank you. Now I'll ask Sister Fatima Wirsi. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Go ahead. Yahluku yu'ti turja'un. Mhm. It's B. He creates, he gives, you all will be returned. Okay, go ahead. Number 5 is wasiun, wasib, a'udhu. That's B. Extensive, enduring, I seek refuge. Seek refuge. Okay, go ahead. Do the first Shall I do one. the next? The first one you can do. Okay. The first one, and his is the enduring religion. That's A. Walahul dinul wasiban. Now the translation And, his number is 2, the enduring religion. The better translation will be for him is the enduring religion. The better translation will be like this. But they have written in the book, and his is the enduring religion. So you can cut and you can write on top of it. And for him is the enduring religion. Thank you. but Galaxy S7 Edge. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. That owns not for them sustenance. لا يملك لهم رزقا. Okay. B. B. Okay. The translation again, there's a problem that owns not for them sustenance. The better translation will be he does not possess for them sustenance. The translation will be like this. The voice is correct, or there is a lag in the voice from my side. I also hear the sound is very faint and a lot of crackling. No, there is lagging or not lagging. We are having lots of rain. Wait. Yes, Sister Fatima Ji. Sorry, just that the sound was cracking a lot, so just wanted to say that. Okay, let me exit and come back. I think this is the one you can stay all of you here. Okay, let me exit, and I'm giving this, for example, to give. We can't hear you, Sheikh. For a while. I need to do.